channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no. क्या बोल रही मुंबई की पब्लिक? मचाएंगे ना, आएंगे ना. Okay, big shout out to Decipher and Roshan. Oh, पंटाई. Thank you guys, thank you. What? What's up? क्या बोलते? Okay, so कुछ चीजें हैं भाई, आपने बहुत कमाल तरीके से सबको ये तो दिखा दिया कि आप कितने कमाल के रैपर बन चुके हैं. लेकिन अब मैं एक सच्चाई बताता हूँ. एक फिल्म को अगर बनने में 1 साल लगता है, सो आई थिंक शायद रणवीर ने इसकी शूटिंग 2018 में स्टार्ट की होगी. 2017, 2018 you must have shot for Gully Boy. लेकिन what people don't know is कि रणवीर रैपिंग जो है at least in front of me 2011 से कर रहा है. From the time I met him for a film called Gunde. And if you don't believe this, मैं यहाँ पे अभी ये प्रूव कर सकता हूँ. I am going to just throw words at रणवीर और रणवीर on the spot रैप बना सकता है. This is a challenge. वो क्या था वो रैप? गुंडे में वो क्या बोला था? मेरे साथ बैठी है प्रियंका चोपड़ा, पसंद है मुझे इसका क्यूट सा थोपड़ा. क्या बोलते? टैलेंट्री. Alright, are you ready to take this challenge, Ranveer? Bro, What? for it. Simple words हैं. Alright, so what? You're going to throw words? I'm going to throw words. Rather, you know what? I'm going to throw names. Okay? So the first name I'm throwing is Ritesh Sidhwani. Rap on Ritesh Sidhwani. Give me, hit 2 lines, man. Ritesh Sidhwani. भाई क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर है मेरा, आगे जाके पिक्चर करनी है. एक्सेल में क्या कर रहा है? तो कुछ अच्छा बनाते हैं. अच्छा बनाओ. Ritesh Sidhwani. तू है मेरा सिंधी भाई, मैं भी भावनानी. Oh! बहुत. Next name. Your ex co-star in Dil Dhadakne Do, and also the producer of this film, Farhan. ओहो, फरहान. मुझे पिक्चर में डायरेक्ट कर, मैं तीर तू मेरा कमान. ओह, बहुत हार्ड. लास्ट बोलो ना, पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं यार, कमाल है. Last one. तुम्हारी इस फिल्म की co-star. Your word is आलिया. ऊपर वाले ने तुझ में कितना टैलेंट डालिया. I don't think these 3 people need any introduction that is better than what Ranveer just gave them. Oh. Ladies and gentlemen, presenting, of course, here I have आलिया, रितेश एंड फरहान. लेकिन ये जो आपकी सबसे स्पेशल जोया जी हैं, उनके लिए आप इंट्रोडक्शन देंगे. जोया आजा, गलियों की रानी. जोया तेरी सिनेमा में मैं ऐसा खोया. क्या बात है. बीच की तरह तूने मुझे बोया. और बर्थडे पार्टी में बैग होता है खोया. और वो वाले सीन में कितने अच्छे से मैं रोया. Ladies and gentlemen, the director of Gully Boy presenting Zoya Akhtar. Yes sir. Oh, बहुत hard. We saved the best for last. All the khoyas and all the royas. Now we present Ranveer and Alia. Ladies and gentlemen, the Gully Boy team. Ranveer and Alia Bhatt. And of course, now we present 2 gentlemen who are the coolest gentlemen when it comes to the movies. Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar. Okay guys, listen. I know आज यहाँ पे the moment that you've all been waiting for, it's going to be here on screen. But happy birthday, Farhan. And since we are all part of the movies, we're just not going to say happy birthday. This is a surprise. A huge surprise, which you have no clue about. I have witnessed it already, a little. So are we ready? Are we ready? बंदा रेडी. चलो Ranveer? क्या बड़ा रेडी. क्या पैदा हुआ है.
क्या पैदा हुआ? ओ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faru. Happy birthday to. Hit me with it one more time. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल, ये मेरी आरज़ू. Happy birthday to you, Faru. Happy birthday to you, Faru. Happy birthday to Farhana. Happy birthday to you, Farhana. वीरान शेख के फिर से काट डाल तालियां. भाई का बर्थडे, बोले भाई का बर्थडे, बोले भाई का बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, बोले भाई का बर्थडे, बोले भाई का बर्थडे, बोले 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 हैप्पी बर्थडे मेरा मेरा भाई, मेरा हैप्पी बर्थडे मेरा. ओह
Rakesh. यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना। What did I tell you? People like me wanted to go, even with my dysfunctional family, onto a cruise. Then there was the film where Farhan also was there, where I wanted to go with my friends. But this film is raw, it's real, it's got the streets. How did this story evolve? When did you pick up the story to do a film like Gully Boy? I was editing Dil Dhadakne Do, and my editor Anand Subaya actually showed me a video. So this was 2014. Showed me a video of an artist called Nazi who was like 21, and he had put up a song called Afat. And that's the first time I actually saw real, authentic, what now is called gully rap. And it was just stuck in my head, and from that moment till now, I mean, it's just been a journey. It just took me where, I mean, I'm here now. Boy, how is that? Because you were stepping onto an Excel set and being directed by Zoya. I think it has been one of my most, I keep talking about it, people need to stop me from talking about how brilliant my experience was working with Zoya, working with Excel. I think they are such a fantastic team. Please clap for yourselves, guys. I've never worked with a better team. They are so on point with everything, and because this film, like you said, is so raw, it's so like it comes literally from the stomach, from stomach to the heart to here, and then Ranveer. So I really felt that on set. And I mean, I'll talk about my character much later, but it was a crazy day. देखना है जरूरी। So sweet. Okay, Ranveer, third time that I'm meeting you in the last year, thanks to your films, right? Last year, this month, Padmavat released, you were in a different zone. Then Simba came, where I again saw you transform, and now I've again seen you transform in a month's time. Bro, this character is close to your heart because rap is something jo hamesha se you've been very fond of, and then you get this film. It's like khol do sare darwaze, khol do pitare. हाँ? मैं सबसे पहले जब भी किसी ने मेरे को गली बॉय के लिए पूछा था, मैंने बोला ये मेरी फिल्म है, और कोई करता मैं जल के राख हो जाता, ये मैं ही कर सकता था, इसीलिए पैदा हुआ हूँ, and it's a coming together of too many things that are very, very dear to me. Rap, hip hop music, which I've loved since I was a kid. Mahanagri, meri Matrubhumi, Mumbai. This beautiful person here, who is really more than a director to me. She's my friend, confidant. She's so special to me in my life as a person, more than a director. These fine gentlemen here, the best in the business. Ritesh is like family to me. We go way back. Our parents go way back. Farhan is, I think, a renaissance man, a creative force of nature, who I have tremendous admiration for and have been fielding for him to direct me since 8 years now. Hopefully he'll consider me someday. And this, well, I don't know what to say about her. I really don't know what to say about this. I don't know how she happened to us. We are lucky that we have an actor like Alia Bhatt as a part of our cinema. So yeah, really, too many special things in one thing. And Not difficult because Ranveer, I mean, he is the Energizer Bunny, but he's extremely sensitive, and he's an extremely no, he is. He's got very high EQ, and he's an actor, so he knows what he has to do when he takes this particular part on. It just so happened that he has done 2 films with me where he's not hectic in both. अगर मुझे कोई लगाम लगा सकता है वो है तू ज़ोया तू. Yeah, and sometimes you when you're shooting with him, he does his first take, gets all the energy out, and then from the next take he kicks in. So you have to allow that. Yeah. And Ranveer, how was the process of preparing for this, the language and the style for the street rapper? Yeah, just how was me it? and my high vibe. Babe, what can I tell you? It was the most fulfilling process, man. Just to be amongst the real boys, the rappers themselves. There's such raw talent, the way they've written. Look at what happened with Spitfire, with Nitin Asli. Hip Hop came out and everybody's like, who is this kid?
and we're really happy that we have a very wholesome album that we're very excited to present to you. All of them have contributed towards it. Just interacting with them was one of the fondest memories I'll hold with myself for the rest of my life. In that prep process, in those workshops with them, working on the dialogues with them, collaborating on the music with them, it's an experience of a lifetime. Yeah, making your talent brighter and putting that out in the world, does that help? Look, I'll repeat my question. Can you repeat the Too question? carried away by releasing. So I'll repeat my question. Oh, Faye's getting infected with my high vibes. Exactly. Do you want help in holding the camera? It's fine. So my question is, do you think that being rich basically helps your talent to shine brighter because you have certain comfort? And like a person who is not that rich may have to find other things to basically The struggle. their talent. Are you talking rich and talent wise? No, like if you have... That's a very good interpretation, Ritesh. But I think Madam is asking a different kind of question. Yeah, so I'll give you an example. You got it? Babe, I'm intelligent in spite of my high vibes. So, all this, how rich you are, how poor you are, it's all relative, Even a rich person can have struggles that you and I don't know of. Everyone in this world is struggling and going through the agonies of existence. That's why the best thing you can do is just be kind. Coming to, more specifically your question, you saw the line in the trailer. जितने भी आर्टिस्ट लोग हुए ना सारे भूखे भुक्कड़ ऐसी हालत की मतलब इतने भूखे की नोच के खा जाए. So invariably you find that some kind of struggle that you're going through gives birth to art and artistry, kalakari as they say, that comes out of you. And we have that theme in our film, so I'm really looking forward for you to see it and hopefully gain something. Thank you. उनके लिए स्पेशल सोलो शो दूंगा. उनकी रिएक्शन कैसे थी ये ट्रेलर और मूवी? ट्रेलर उन्होंने देखी नहीं है, टीजर देखा तो उनको बहुत पसंद आया. इट वाज अ वेरी नॉवल अप्रोच. जोया मैडम ने खुद अपने हाथों से काटा है और शी लव्ड द टीजर एंड शी इज वेरी प्राउड. ट्रेलर में भी बताया एंड रियल लाइफ में भी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि हम सभी जानते हैं एक्टर तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसे आप बताना चाहेंगे कि एक्टर बना हूं मैं अपने दम पे, तूने तो कपड़े पहने अपने बाप के पैसों से, तो किसी को आप ऐसा कहना चाहेंगे? फिलहाल तो ट्रेलर के अंत में मैंने उस रैपर को बोला था जिसको मैंने रैप बैटल में हराया था. बट माई फेवरेट लाइन आई टेल यू इज कलाकार मैं कल को आकार दूं, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना. ओ माय गॉड, इस लाइन के लिए मेरे लिए तालियां, जो कि मैंने नहीं लिखी है लेकिन क्रेडिट लेने में क्या जाता है. हाँ, वो बहुत इसकी अगर आप वो आप लाइंस को लेना, बहुत कमाल की राइटिंग है इस फिल्म में. आई थिंक that Spitfire, there are all the authentic boys, the rappers themselves have contributed to the album. They have, I believe, ma'am, the lyricist credit. Yes, of course, absolutely. So please do tell us how many songs are there. Usha with the bars. Actually, for the first time, मैं कम रोई हूँ और दूसरों को ज्यादा रुलाया है इस फिल्म में. जब आप पूरी फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा. कैरेक्टर के बारे में आई डोंट नो हाउ मच आई एम अलाउड टू से एज ऑफ नाउ. यही कहूंगी कि जो मैंने धोपता है इस फिल्म में, जो धोपतूंगी ना उसको, धोपतूंगी ना इसको, मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है. So if you all know what that means, then you'll probably get a hint of what I'm saying. छोटी तू बहुत एक सेकंड. एक सेकंड. Am I playing her? I mean, yeah, I'm playing a student. Yeah, मैं liver transplant कर सकती हूँ आपका अगर आप चाहो तो. कभी रियल लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के किसी को धोखता है? अब तक तो है, पर जिंदगी बाकी है. पर शायद कभी नहीं करूँगी क्योंकि आई एम नॉट मैरिड. किसी की मजाल है, पर मैं दिमाग में शायद धोख दूंगी दूर से. अरे कोई भी गुलू करे आईलैंड बॉयफ्रेंड के साथ की मजा. हाय सोया तो जोर से बोलो. अरे माइक नहीं है उसके हाथ में, माइक नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे. कमाल है यार, कैसी पब्लिक है यार. Yes. Okay, we're going to do one last question after this.
काफी फैमिली मूवीज आई थी, जैसे रेस हो गई या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या फिर जीरो, वो उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे, बट एट द सेम टाइम जब अपनी पद्मावत आई थी एंड प्लस सिम्बा आई थी और उसने बहुत ज्यादा ग्रेट किया है, तो क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम आ गया है? अभी बोल रही है तो मान लेता हूँ, बड़ा मानना है मुझे। अच्छा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिन फिल्मों में मैंने काम किया है पूरी शिद्दत से किया है कि उन्होंने अच्छा और अच्छी निकल गई, बहुत अच्छा कमाल का साल रहा मेरे लिए। जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब किसी दूसरे की फिल्म काम नहीं करे। मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसी इंडस्ट्री से हम सबका पेट पलता है, तो सब हार्डवर्क करते हैं और ये मैं जानता हूँ। तो जब किसी की फिल्म चलती है मुझे बुरा लगता है, और अच्छी चल जाती है खास करके खुद की तो बहुत ही अच्छी। क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं या फिर क्या डिफरेंसेस देखती हैं? सिमिलैरिटीज काफी है कि दोनों सुपर ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं और दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अलग बस ये होगा कि एक के साथ गलीवर कर लो, एक के साथ ब्रह्मास्त्र कर लो। एक थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, एक थोड़ा कम। And we are taking the last